So in register addressing mode, first of all we have a operation code, then your name of the register number, right? So for example, example includes add. So add is a operation code, R1 comma R2. So these are your register numbers, right? So this is your source and this is your destination, right? So data, so addition, it will result into R1 goes to R1 plus R2. So the contents of register R2 will be added up with R1 and the result will be stored into R1 register. Am I clear? So this is the simplest addressing modes which deals with register. So this addressing mode provides fast access of operands because we don't have any sort of memory access. इस केस के अंदर हम किसी भी तरह की memory को access नहीं कर रहे हैं. So this mode is the fastest mode, right? So take one more example. For example, here you have second example is add R1, right? So what it will do, so here you have the registers. Basically it will do the contents of accumulator will be added up with R1. So this is your R1 register and the value is 100, right? And the initial value in accumulator is, let's suppose we have 500. So what will be the result of this instruction? The contents of R1, that is 100 will be added up with 500 and the result will be stored back into accumulator again. So the result will be 600. So it will be stored into accumulator itself, right? So that is why this mode is called register addressing mode. One of the operand, it will be in registers, second will be register, or it will be accumulator also. Am I clear? Yes or no? हेलो बेटा, आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? Yes, sir. अभिजीत कुमार, Yes, अभिषेक, sir. अभिषेक, अजय कुमार शर्मा, अक्षय, why don't you respond me? सर दोबारा दसो जरा. केड़ी चीज बेटा दोबारा दसा? सारे दस दो. लेक्चर सुनते पे हो तुसी? Yes, sir. हेलो हेलो Yes, sir. So why this is called register addressing mode? Because one of your operand will be stored in register. One of your operand will be stored in registers. Either you have, suppose you are performing add operation, add R1 comma R2. What will be the result of this instruction? The contents of R1 will be added up with the contents of R2 and the result will be stored back in R1, right? So in second example, we have taken one operand in accumulator. For example, here the instruction is add R1. So by default, the second operand will be accumulator itself because we haven't tried AC in the instruction. So it is understood by you people that the second operand should be in accumulator itself, right? So what will be the result of this instruction? Add R1. The contents of accumulator will be added up with R1 and the result will be stored into
accumulator itself, right? So initial value of accumulator is 500 and the initial value of register R1 is 100. So 500 plus 100, the result will be 600 after addition, and it will be stored into accumulator itself, right? So next mode is register indirect addressing mode. Register indirect. So register addressing mode is also called register direct addressing mode, right? So the next addressing mode, number 6, is register indirect addressing mode. AM means addressing mode, right? So again, the syntax will be operation code plus register number. So your effective address is equals to M of R. Whereas in case of register direct addressing mode, your effective address is equal to R. Means where the operand stored. So your operand stored in register itself, so it is equivalent to R. But in case of indirect addressing mode, it will be M of R. It will be M of R. Means what will happen in case of normal indirect addressing mode? You need to fetch the memory twice, right? You need to fetch the memory more than one time. So it will act as same, right? But in case of memory, now you have register itself. So how it will work? Let's take an example. So here, for example, LDAXB. So load LDAX, it will, X means it will work for register pair, right? So what this instruction will do, it will load the contents of register pair into accumulator, right? So basically BC is a register pair, 16-bit register, right? So BC is a 16-bit register. So for example, how it will work? So here you have the data BC, right? So you have the data BC. Again, in M of BC, one more register is mentioned. In the memory of BC, one more register. It can be register pair or it can be, for example, HL, right? So again, you need to visit HL where you find the operand. So the contents of accumulator will be added up with the contents of HL and the result will be stored into accumulator. For example, the initial value of accumulator is 200. So 200 plus 100, the result will be stored into accumulator as a 300. Am I clear? LDAXB. So here B means register pair. You need to take BC, M of BC. So first of all, you need to visit BC. So BC's content is HL. So HL के content क्या है हमारे पास 100. So 100 will be added with 200 and the result will be stored in accumulator again. So this mode is helpful for quick access of memory location in array, right? So I will send you the complete theory notes in the group, right? After the completion. Next addressing mode is addressing mode number 7, auto increment or auto decrement. Auto increment or auto decrement. So again the syntax will remain same, operation code, and you have
register number, operation code, and you have register number. So what this will do, when the address stored in the register refers to a table of data in memory, so it is necessary to increase or decrease the register after every access to a table. So this can be achieved using this mode. So for example, let's take a simple example. For example, so here you have a array of data in the form of table 1 2 3 4 5, and your data value is 100, 110, 120, 130, 140. So here you have consecutive memory locations in the form of array. So after you have fetched number one memory location, your second memory location will be automatically incremented, right? Your third memory location will be automatically incremented. So here this mode plays an important role where you need to increment the contents of your table. Then we will go for auto increment in case of incremented the locations, and if you want to decrement the locations, then you will go for auto decrement mode. So let's take an example. So the name of the mode is auto increment. की हाँ ले जाओ हाँ जी ਇਹੋ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਆ ਉਤਰਿਆ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ for example, so here you have LDAXB. So here after fetching, let's suppose BC's value, BC occupies number one location and the value is 100. So after performing this operation, load accumulator, after it will load the contents of BC. So here the contents of BC is M of BC is 100. So first of all, it will transfer 100 into accumulator. After the first value will be loaded, it will increment. It will increment the contents, right? So now the BC will becomes number 2 and it will load 200 this location and so on, right? So take one more example. For example, here you have move. The instruction is move R2 comma plus R0. So plus means auto increment mode. How it will work? So it copies the contents of R0 to R2, then the value is incremented by 1, right? So how it will work? The initial value, that is R0 is having value 100 and R2's initial value is 200. So first of all, it will load the contents, that is 100. 100 will be loaded into R2. Then the contents of R0 will be incremented by 1. So it will become 101, right? Plus means auto increment. So the contents of, if it is written along with your register number, then the contents of your register will be incremented. So first of all, in case of auto increment mode, the contents of R0 will be copied down to R2. After the contents will be stored into R2, the value of R0 will be incremented by one value. So it will become R0 goes to R0 plus 1. So ultimately it will give you 101, right? So if I have written move, second example, if I have written
move r1 comma minus r naught. So what this instruction will do, initially the contents in case of auto decrement, so this is minus. Minus means decrement. If you place plus along with your register, it means you are performing auto increment mode. Auto increment. And if you have written minus r naught, it means auto decrement mode. Auto decrement. So what it will do in case of auto decrement mode, first of all the contents of r naught will be decremented by 1, and then it will be transferred to r1. Let's suppose the initial value of r naught is equals to 100. So first of all it will be decremented, the value becomes 99. So now the contents 99 will be transferred into R1. So this is a main difference between auto increment and auto decrement mode. Am I clear? Clear है students? Auto increment और decrement में क्या difference है? अंकित? Yes, sir. मैं दोबारा बता रहा हूं, शुरू से देख लीजिए. अगर आप यूज कर रहे हो प्लस आर नोट, अगर आपने ये चीज लिखा हुआ है मूव R2 कोमा प्लस आर नोट, तो इस केस के अंदर क्या होता है, लेट सपोज आर नोट की इनिशियल वैल्यू है 100 एंड R2 की इनिशियल वैल्यू है 200. सो इस केस के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल the contents of R naught will be copied to R2. So इसका रिजल्ट क्या आएगा, 100 will be overwritten to R2. ठीक है. So R2 के अंदर नई वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 100, right? After that the contents will be incremented. R naught is equals to 101. ये होगा आपका auto increment mode के अंदर, right? But in case of auto decrement, first of all the value will be decremented first. Suppose the initial value is 100. So first of all, it will be decremented by 1. Decremented by 1, 99. So 99 will be transferred into R1 according to this instruction. Am I clear? So this mode is basically used where we have a consecutive memory locations in the form of arrays, right? So let's take one more example of for auto increment. So for example, the instruction is move R1, 101 and add AC, R1 plus. So plus means auto increment mode. So first of all, 101 will be copied into R1. So R1 is having 101. Am I clear? After that, the contents of memory location, the contents of what it will do. So add, this instruction will do add AC, R1 and R1 goes to R1 plus 1 after that. So first of all, 101, the contents of 101, that is 101 will be added with accumulator and the result will be stored into accumulator, right? For example, the value of accumulator is 10. So what you will get, AC goes to 101 plus 10. So you will get 1020, right? So because it is auto increment, so now the value of R1 will be incremented by 1. So for next instruction, it will become 1011 plus 10. So it will becomes 1021 and so on, 1012 and so on. So correspondingly, it will go on. So it will store your result as 1022, right? So whenever you have a consecutive memory locations,
then you will go for auto increment or auto decrement mode. Am I clear? Clear, students? So next we have relative addressing mode. Relative addressing so what will be the syntax for this mode? So we have operation code and you have a offset. So how you will get your effective address is equals to address field of the instruction plus contents of program counter PC. So it will give you your effective address, that is your operand, right? So let's take an example. For example, the instruction is jump +8 PC. So what it will do, you will get the effective address as EA is equals to PC +8. So let's take PC is having the value 300. 300 plus 8 is equals to 308. So the offset part is +8. So at this location 308, your operand will be stored. So here +8 is acting as your operand. Am I clear? Offset. So the instruction will be jump +8 PC. So the initial value of program counter is 300. So 300 will be added up with 8. So you will get 308. So this is the memory location. 308 is the memory location where you are finding your operand. So let's suppose the value of operand is 500, right? So effective address is 308. This is your effective address where you find the operand, right? Am I clear about relative addressing mode? So it says that the basic syntax is operation code and offset. Okay? So here the operation code is jump. The offset value is +8. Offset is +8. So you need to add 8 in PC. So it will becomes your effective address. Similarly, you can write it as jump -8 PC. So your offset will be in plus or it will be negative. Your offset may be positive or it will be negative. So what will be the value of EA if the operand, if the offset is negative? So your value is 292. So here you will get the operand at 292. Am I clear? Yes. So this is your addressing mode number 8th, relative addressing modes. I am repeating again, all the addressing modes are very, very important in 10 marks. Clear hai? So next, so this mode is basically used in branch address. So wherever you are going to branching something, so you are adding something, jumping something. So this is particularly used for that. So this is a advantage. So wherever you need to go for branching or you need to jump somewhere, simply go for relative addressing mode. Relative addressing mode is basically used for branching, right? So next, second last addressing mode is indexed addressing mode. So index addressing mode is index
addressing mode. So again the syntax is, you have operation code, OP code, and you have the address field. And how you will get effective address? Effective address is that where you are finding operand. So this is equals to address field plus the contents of index register. That is why this is called index addressing mode. How you are going to find the effective address? That is how you are going to find the operand, simply by adding the address field to the contents of index register. So let's take an example. For example, add 002. So let's take an example, add 002. So let's suppose R1 is acting as a index register, okay, and it holds the value 1. Let's suppose R1 is the index register and it holds the value 1, and the instruction is add 002. So this 002 is acting as your address field. Am I clear? This 002 is acting as your address field, right? So how it will work? So basically AC goes to AC plus 002. So this is your address field, right? AF. So first of all, the contents, how you are going to find EA? The contents of address field will be added up with the contents of index register, IR, index register, right? So here you are having 002 plus the contents of index register is 1. So your answer is 003. So here at 003 you are finding operand. Let's suppose the value is 220 and the initial value of accumulator is 100. So your answer will be AC goes to AC plus 220, right? So it will be stored as 100, 320. So 320 will be stored into accumulator. Am I clear? ये समझ आया? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या करता है? सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है, you need to use the index register. So here I am considering R1 as a index register and it is having the initial value 1. Let's suppose, ये मैंने supposition कर ली अपनी तरफ से, right? So how you are getting effective address? Address field. So address field is 002. So 002 plus the contents of index register, that is 1. So 003. So this is it will becomes your effective address. So 003 is that address where you are finding the operand. So the operand is 220. So 220 plus the value of accumulator is 100. So 100 will be added up with 220 and the result will be stored as a 320 in accumulator. Am I clear? Clear है स्टूडेंट इसके बारे में? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से. So next and last is base register addressing mode. Base. Last under the category of addressing mode is base register addressing mode.
syntax is, again you have operation code and you have offset. It is having same syntax as that of relative addressing mode, right? But what is the difference? How you will get effective address? This time, instead of index register, you are having base register. That's it, right? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज. In case of base addressing mode, so the syntax is same as that of relative addressing mode, addressing mode number 8. The syntax is same, right? So here the effective address is equals to address field plus the contents of base register. So you are going to add the address field with the contents of base register to get the effective address, to get the location of effective address, right? So here you can also write it as, here you can also write address field AF, right? So for example, here you may write subtract 003, subtract 003, and the value of contents of base register is 10. Let's suppose R2 is acting as a base register and the value is 10, right? So what you will do here, you need to subtract accumulator. AC goes to, so first of all 003, so this is your address field. 003 is address field, so it will be added up with base register. So your answer will be 013. 003 plus 10, you will get 013. So at 013, the content says the value of 013 is 100. So here you are going to subtract AC minus 100. So let's suppose the value of AC is 500 minus 100, which is equals to 400. So ultimately result will be stored in accumulator as 400. Am I clear? So you need to add the contents of address field with the contents of base register, as the name suggests, that base addressing mode. So in this base addressing mode, we are using base registers, right? So it is quite useful for accessing array elements as well as characters and strings. So relocation of program in memory, that is generally required in multi-programming environment. So wherever you are going to use multi-programming concept, so there base addressing mode is used, right? So this is about your addressing modes, 10 addressing modes. I'm again repeating one more time all the addressing modes, the name of all the addressing modes. First addressing mode is immediate addressing mode. Second, implied addressing mode. Third, direct or absolute addressing mode. Then we are having indirect addressing mode, register addressing mode. Then we are having register indirect addressing mode. Then we have covered auto increment, auto decrement. Then we have covered relative addressing mode. Second last, index addressing mode. And last but not the least, we have discussed recently base addressing mode. Am I clear about all the 10 addressing modes? Clear है बेटा? Yes, sir. So Yes, sir. let's एक पोल अटेम्प्ट कर लें पहले हम, ठीक है? उसके बाद फिर आगे टॉपिक करते हैं कंटिन्यू. अभी आपके सिस्टम पे पोल अपीयर हो रही है, तो फिर आपने आंसर करना है, ठीक है?
सर आपने लॉन्च कर दिया पोल? एक्सक्यूज मी सर। बेटा 2 मिनट कर रहा हूँ, अभी नहीं की है, 2 मिनट Okay, वेट sir. कीजिए। यार क्वेश्चन क्यों उठ गया? सेव क्यों नहीं है यार पोल? पोल कर सब ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, कीजिए अटेम्प्ट। दिख रही है पोल आपको? हेलो, पोल दिख रही है बेटा? Yes, sir. करो इसको अटेम्प्ट। आंसर क्विकली, आई एम गोइंग टू एंड दिस पोल। हरी अप, आंसर क्विकली। आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। Which addressing mode is used for branching? You just need to find out
थैंक यू स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स रह गए अब रहने दीजिए। आई थिंक वो प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में, सोए हुए हैं आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स पोल अटेम्प्ट करते हैं ना, उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी। बाकी चाहे आगे एक बार निकल जाते हैं, जाने दीजिए। तो मैं एंड कर रहा हूं। तो इसका आंसर जो है दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है जो हम ब्रांचिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी ना, जंप वाली, जंप प्लस 8 पीसी, राइट। सो अगेन वन मोर पोल। सो इसका भी आंसर कीजिए फटाफट। Hurry up, students, hurry up. So you need to name the modes where we need to fetch the memory twice. ये मोड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। आपको नाम बताना है जहां पे आप मेमोरी को दो बार रेफर करते हो, ठीक है। So I am going to end in 20 seconds. Hurry up. So thank you. So इसका बेटा जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, रजिस्टर इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। सो रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस के अंदर हम लोग दो बार रजिस्टर्स को रेफर करते हैं, ठीक है। एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग वी आर फेचिंग द मेमोरी ट्वाइस, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, ठीक है। So what will happen in case of interrupt? एक मिनट वेट करना था। The
the definition of interrupt says an interrupt is an asynchronous signal from the hardware indicating the need for attention, or a synchronous event in software indicating the need for change in execution. It means, suppose I am teaching you CoLP, and the moment the another person comes and stopped me from teaching, this thing is called interrupt, right? You are writing a CD in a DVD writer, and suddenly your system stops working due to electricity. So this is called interrupt. Am I clear? Okay. So this is the definition for interrupt. So now interrupt mechanism. I'm repeating again. Let's listen the definition again. An interrupt is an asynchronous signal from the hardware indicating the need for attention, or a synchronous event in software indicating the need for change in execution, right? So this is called interrupt. So next we have mechanism of interrupt. So interrupt can be described as a transfer of program control from currently running program to another service program. Suppose I am working on this. So this is my current program, right? And this is my service routine. ISR, let's suppose interrupt service routine. I am working on these programs 101, 102, and suddenly interrupt comes and I will stop executing this program and I will servicing to this routine. This is called interrupt. So it can be described as a transfer of program control from a currently running program to another service program on a request generated externally or internally, right? So after the service program is executed, the control returns to the original program. For example, I am working on 102 instruction. I am working at 102nd instruction and I will stop working, right? And I will handling. Now my program control will transfer to ISR. After the execution of this entire program, my control will goes to 102 instruction again. So this is called interrupt mechanism. Interrupt mechanism is basically deals with how the program control occurs after the handling of your interrupt service routine, right? So next we are having the categories of interrupts. So precisely we have 4 categories of interrupts: hardware interrupt, software interrupt, maskable interrupt, non-maskable interrupt. I'm repeating again. We do have 4 categories of interrupts. We do have 4 categories of interrupts: hardware interrupt, software interrupt, maskable interrupt, and last but not least, non-maskable interrupt, right? So let's get started with each interrupt one by one. First of all, we are having hardware interrupt. So when an interrupt is initiated by a hardware in response to special internal or external conditions, a hardware interrupt is said to have occurred. So whenever the interrupt is occurred due to certain hardware changes, that thing is called hardware interrupt. So again, hardware interrupt is having 2 categories. You will get interrupted by internal hardware devices, or you will get interrupted by external hardware devices, right? So let's differentiate between these two. First of all, external.
So these are received from external peripheral devices, for example, input device or output devices. So input output device requesting transfer of data. So this is the example of external hardware interrupt. Input output device requesting for transfer of data. For example, we want to send some input to CPU. So this is a external hardware interrupt. Input output device finishing transfer of data. Again, example, timeout interrupt. Whenever you have a program in endless loop, whenever you have a program in endless loop, that thing is example under external hardware. Power failure, power failure. Power failure is an example of external hardware interrupt. So what will happen in case of internal interrupt? These are also known as traps or exceptions. These are also known as traps or exceptions and are hardware interrupts that are generally internally to the processor, generally on the occurrence of an erroneous condition during the program execution. For example, divide by zero, overflow error, breakpoint, use of invalid operation, protection violation, out of bound range. You are using some range of arrays which is your out of range. Okay, so all these conditions occurs in internal hardware interrupt. Divide by zero or overflow error, breakpoint, use of invalid operation codes. Right, am I clear about internal hardware interrupt or external hardware interrupt? Yes or no? हाँ जी स्टूडेंट, समझ आ रहा है इंटरप्ट क्या है? Yes, sir. Yes, तो sir. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. So software interrupts are initiated by executing special instructions. These are special call instructions that behave like interrupts rather than subroutine call instructions. So whenever you have some special instructions, right, and whenever you are executing those special instructions are called software interrupts, right? So we are having one example with us, int. So int is a special instruction which comes under the category of software interrupt. Next, third category is called maskable. So maskable interrupts can be masked out or logged out for a short period of time by software to allow the CPU to perform critical operations. Maskable means masked out. मास्केबल इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं जिसको आप थोड़ी देर के लिए रोक सको. ठीक है, जिसको आप थोड़ी देर के लिए लिंगर ऑन कर सको, रोक सको, सो दैट उतनी देर के लिए आप अपना काम कंप्लीट कर सको. दैट इज थिंग इज कॉल्ड मास्केबल इंटरप्ट्स. सो दे कैन बी डिसेबल्ड बाय क्लियरिंग द इंटरप्ट्स. सो अनेबल फ्लैग यूजिंग क्लियर अनेबल फ्लैग CLI इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो टू enable it, set instruction enable flag, इसको छोड़ दो. ठीक है, सो मास्केबल इंटरप्ट्स कौन से होते हैं? जिनको हम थोड़े टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, जिनको थोड़ी देर के लिए मैं रोक सकता हूं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं और एक दूसरी क्लास का स्टूडेंट आएगा और मेरे को बोलेगा कि सर मेरे को आपसे काम है, तो मैं उसको क्या करूंगा, तू बाद में आइयो. ठीक है, मैं उसको बोलूंगा कि आफ्टर फिनिशिंग माय लेक्चर यू विल मीट मी अगेन, राइट? सो ये है मास्केबल. ठीक है, और नॉन मास्केबल की एग्जांपल क्या है? जिनको हम डिले नहीं कर सकते हैं, जिनको हम मास्क नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेमोरी रीड एरर अगर आपके पास आ गया, आपकी हार्ड डिस्क काम करना बंद हो गई, तो क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, नई हार्ड डिस्क लगानी ही पड़ेगी. So non-maskable interrupts cannot be masked out. They are used for the conditions
that require immediate attention by the CPU. पावर फेलियर, अगर लाइट चली गई है तो आपको अपना कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्लियर है चारों के चारों इंटरप्ट? Am I clear about these 4 interrupts? ठीक है। सो सॉफ्ट हार्डवेयर इंटरप्ट जो कि हार्डवेयर के द्वारा इनिशिएट करे जाते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल के केस के अंदर आपके आ जाते हैं जो आपकी इनवैलिड कंडीशंस होती हैं, मींस एरर्स हैं आपकी कंडीशन के अंदर, वो आपके सारे इंटरनल हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। एक्सटर्नल जो कि आपका एक्सटर्नल कीबोर्ड या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वजह से आते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या है आपके, जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की वजह से आते हैं, फॉर एग्जांपल इंट, ठीक है। देन वी आर हैविंग मास्केबल इंटरप्ट्स व्हिच कैन बी मास्क्ड आउट, जिनको थोड़े टाइम के लिए रोका जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, जिनको आप डिले नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइट चली गई है, आपकी मेमोरी रीड करना बंद कर गई है, तो उस केस के अंदर आपको हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अगर पावर फेलियर हो गया है तो आपको सिस्टम को शट डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर टॉपिक इंटरप्ट। नेक्स्ट, program status word. Next definition is PSW. Program status word, और इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PSW. So the collection of all the status bits condition in the CPU. So whenever you are going to club all your status bits, right? When you are going to club all your status bits, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कौन कौन सी status bits होती हैं. So it will form you a PSW. So इसकी definition क्या है? The collection of all status bits conditions in the CPU is known as PSW. The PSW is stored in a separate hardware register and that contains the status information that characterizes the state of the CPU. ठीक है, तो ये जो आपका PSW है, ये एक हार्डवेयर रजिस्टर के अंदर स्टोर करा जाता है। स्पेशल हार्डवेयर रजिस्टर होता है जिसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है, ठीक है। सो PSW इंक्लूड्स द स्टेटस बिट्स फ्रॉम द लास्ट ALU ऑपरेशन। आपका जोन सा भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ने जो ऑपरेशन परफॉर्म करा हुआ है लास्ट, उसके जो स्टेटस होगा उसकी वैल्यू किसके अंदर जाती है? PSW के अंदर। नंबर 2, इट स्पेसिफाइज द इंटरप्ट्स दैट आर अलाउड टू अकर। ये आपको इंटरप्ट्स के बारे में भी बताता है PSW जो होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट आल्सो टेल्स वेदर द CPU इज ऑपरेटिंग इन सुपरवाइजर मोड और इन यूजर मोड, ठीक है। ये जो आपका PSW है, ये आपको ये भी बताएगा कि आपका जो CPU है वो सुपरवाइजर मोड में काम कर रहा है या फिर वो यूजर मोड में काम कर रहा है। मैं अभी दोनों में डिफरेंस बताता हूं आपको। ये जो सुपरवाइजर मोड होता है, an operating system controls and supervises all the other programs in the computer. There is no restriction, all the instructions will be used. It is also called system mode. So supervisor mode के अंदर क्या होता है, किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। You can use any instruction, right? So इस मोड को हम सिस्टम मोड भी बोलते हैं। ये आपका सिस्टम है जो सुपरवाइजर मोड को यूज करता है। नेक्स्ट जो है जिसको बोला जाता है ALU, यूजर मोड और स्लेव मोड। यूजर मोड या फिर स्लेव मोड, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका CPU है वो यूजर मोड में काम करता है। जो आपका CPU है वो यूजर मोड में काम करेगा। यूजर मोड को हम लोग स्लेव मोड भी बोलते हैं। क्यों स्लेव मोड बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे
जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं. वी हैव अ restrictions on the number of instructions whereas in case of supervisor mode or system mode there is no restriction on the instructions, right? So that is why this mode is called slave mode, right? So status bits क्या होती हैं वो देखिए जरा. So sometimes also known as flags are 1-bit value that indicate various information about the processor's state. मीन्स कि आपका जो प्रोसेसर है वो किस स्टेट के अंदर है ये हमेशा 1 बिट की इंफॉर्मेशन आपको बताएगी, 1 बिट की इंफॉर्मेशन बताएगी. ठीक है. सो वी हैव C stands for carry flag. S stands for sign flag. Then Z stands for zero flag. V stands for overflow flag. Whenever you are going to club all the flags, it will becomes your PSW. All the status bits. When you are going to club all the status bits, carry flag, sign flag, zero flag, over flag, then you will get PSW, right? So these are the common flags which will use in PSW. So carry flag is set to 1 if the end carry out of ALU is 1 and it is cleared to 0 if end carry is 0. ठीक है. तो आपका जो कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब आपके पास रिजल्ट में एडिशन करने पे आपके पास एंड कैरी आ रही है. ठीक है. अगर एंड कैरी नहीं आ रही है तो आपका रिजल्ट जो होगा वो फ्लैग 0 हो जाएगा. सिमिलरली साइन फ्लैग, सो इट इज सेट टू 1 इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है 1 0 1 0 1, तो यहाँ ये वाली आपकी MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये आपकी होती है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. So sign flag is set to 1 if the MSB of ALU output is 1. अगर ये वाली बिट आपकी 1 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो आपका S साइन फ्लैग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है. अगर ये वाली बिट आपकी 0 है, साइन बिट का मतलब क्या होता है? आप प्लस यूज कर रहे हैं या नेगेटिव यूज कर रहे हैं. ठीक है. पॉजिटिव यूज कर रहे हो या नेगेटिव यूज कर रहे हो, वो आपकी होती है साइन बिट. सो जो आपकी MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो आपको स्टेटस बताती है किसके बारे में? साइन फ्लैग का. ठीक है. नेक्स्ट है जीरो फ्लैग. सो इट सेट टू 1 इफ ऑल द बिट्स ऑफ द ALU आउटपुट आर 0. आपने एडिशन करी है और आपका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करी है और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तब ये वाला आपका जो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा? Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ गई. ठीक है. अगर आपका ALU का कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है तो आपकी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. मींस के ये वाला फ्लैग जो है वो रीसेट होगा. ठीक है. लास्ट है ओवरफ्लो. So it is set to 1 if the overflow condition is satisfied. That is, if XOR of last two carries from ALU is equal to 1 and clear to 0 otherwise. ठीक है. आपने XOR ऑपरेशन करवाया है, XOR का आंसर कब आता है? XOR क्या होता है? 0 0 0 1 1 0 1 1. इन दो केसेस के अंदर आपका XOR जो है वो 1 है और बाकी दो केसेस के अंदर 0. यही होता है XOR ऑपरेशन. ठीक है. अब XOR ओवरफ्लो V इज इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब आपका ये वाली बिट जो है, अगर ये वाली बिट जो है वो आपकी 1 आती है, 1 को XOR करोगे 0 के साथ, योर आंसर विल बी 1. सो दिस V इज इक्वल्स टू 1. आपको याद होगा जब मैंने आपको करवाया था असिमेट्रिक ASHR. ठीक है. ASHR शिफ्ट करी थी ना हमने, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. उस केस के अंदर मैंने लेफ्ट के केस के अंदर हमने ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है. अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट के केस के अंदर हमने एक सर्किट बनाया था जिसके अंदर हमने
ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट यूज करा था, ठीक है। तो ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप आपका कब सेट होगा, जब आपका द सेट इट इज सेट टू 1 इफ द ओवरफ्लो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट इज if the XOR of last two carries from the ALU is equal to 1, ठीक है। if it is equals to 1 then V is equals to 1. So this is about your PSW. So again, time for poll. हाँ जी स्टूडेंट्स, start with poll. लेक्चर चलता गया। सर पोल एंड हो गया सर। एक मिनट बेटा रुकिए जरा, मैं दोबारा करता हूँ, वेट वेट। ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। मैं 3:30 बजे। बेटा वेट कीजिए थोड़ी देर। एडिट कितना नहीं है यार।
हाँ जी स्टूडेंट्स कीजिए स्टार्ट। So I am going to end the poll in 10 seconds. Hurry up. So thank you. So the first question says that which is the category of interrupts? So all the categories belongs to the interrupt types, right? Software, hardware, maskable, non-maskable. Next, PSW stands for program status word. So the second answer is correct. So next and last topic for today is risk versus risk. Very, very important topic. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? वेबसाइट जूम जूम वेबसाइट। एक मिनट वेट कीजिए जरा। हाँ जी, अब देखिए स्लाइड्स आ गई। यस सर। रिस्क वर्सेस रिस्क आ गया। यस सर।
So very important topic from examination point of view. So first we will start with RISC and then we will discuss with CISC. So first of all, RISC stands for Reduced Instruction Set Computer. In some books it has been written computing, right? So both the forms are correct. Reduced Instruction Set Computing, or you can write computer. So to execute each instruction, if there is a separate electronic circuitry in the control unit which produces all the necessary signals, this approach of design of control section of processor is called RISC design, right? So it is also called hardwired approach. Mostly you need to understand it as RH. RISC always use a hardwired approach. That is why I am saying RH, right? So RISC is always using hardwired approach. We have already covered in last chapters hardwired versus microprogrammed approaches, right? These hardwired and microprogrammed control are the categories of CU, control units, right? So examples of RISC processor, basically RISC is what? It is a category of your processor, or you can say that RISC architecture. So IBM RS examples includes IBM RS 6000, MC 88100, right? DES Alpha 21064, 21164, and 21264. So all these categories of processor comes under the category of RISC processors, right? So reduced means wherever you have reduced number of instructions, you have a less complex design of your processors. So features: RISC processors use small and limited number of instructions. RISC machines mostly uses hardwired control units. RISC processors consume less power because they are small size. They are having small in size and are having high performance. Each instruction is very simple and consistent. RISC processor uses simple addressing modes. RISC instructions is of uniform fixed length. Am I clear? So RISC applications. So these are all belongs to the application area of RISC. RISC processors, wireless LANs, network interface cards, server farms, internet appliances, pocket PCs, cell phones, your tablets, telematics and intelligent traffic systems, transport logistics, location planning, security controller, mobile frameworks, and mobile information services, right? So all mobile web services. So all comes under the category of RISC applications. So how RISC computing will look? So let's take an example. So here you have a hardwired control unit. So one arrow signifies instruction is going. So this upper arrow signifies instruction is going on, right? And the lower arrow signifies the data. So LHS, left hand side, this is instruction. Instructions, first of all, the instruction will fetch from the main memory and it will be loaded into instruction cache. Then we have a, from instruction cache, it will be loaded into hardwired control unit, and from hardwired control unit, it will be going to data path, and from data path, it will be going to data cache, right? And similarly, the right arrow is basically used for data. So your data will be, first of all, it will be loaded from data path. So take clearly take, we have only single instruction cache and single data cache because we are talking about reduced instruction set computing, right? So we have a single instruction cache and we have a single data cache, right? So this is about RISC architecture, RISC processor. Am I clear about RISC processor? RISC processor के अंदर क्या होता है? We have a less instructions. We have a, it consumes less power. They are having less instructions in the memory, right? But they are more powerful processors.
मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसका आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम दिखाता हूँ कि ये दिखने में कैसे हैं. नेक्स्ट, CISC. CISC stands for Complex Instruction Set Computer, or you can say that Complex Instruction Set Computing, right? So if the control unit contains a number of microelectronic circuitry to generate a set of control signals, and each micro circuitry is activated by a microcode, this design approach is called CISC design. So CISC के अंदर हम लोग माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का यूज करते हैं. दैट इज व्हाई हियर इट इज रिटन माइक्रो सर्किटरी. ठीक है, क्योंकि RH है तो इसको कैसे याद रखना है आपको, CM, CISC विद माइक्रो प्रोग्राम्ड. सिमिलरली RISC विद हार्डवायर्ड, RHCM, राइट. सो इसकी एग्जांपल्स जो हैं आपके जो पेंटियम प्रोसेसर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, CISC, या मोटरोला के जो प्रोसेसर्स आपके सिस्टम्स में अंदर लगे होते हैं, वो सारी इसकी एग्जांपल्स हैं. आजकल भी जो हो रहा है वो CISC के ऊपर ही काम कर रहे हैं. ठीक है, सो आपकी जितनी भी पेंटियम सीरीज है, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3, या फिर इंटेल की सीरीज जो थी, उसके अंदर हम लोगों ने CISC प्रोसेसर्स का यूज करा हुआ है. सिमिलरली जो आपके मोटरोला की सीरीज हैं 68,000, 68,020, 68,040 एंड सो ऑन, उन सभी के अंदर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर का यूज करा हुआ है. सो इसकी जो फीचर्स हैं, CISC chips have large amount of different and complex instructions, so they use complex addressing modes. Different machine programs can be executed on CISC machine, and it uses micro program control unit. So they are having limited number of registers. Application areas, आपके जो डेस्कटॉप हैं, बिजनेस कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर CISC का यूज होता है. आपकी जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सच एज CD रोम्स हैं, CD राइटर्स हैं, रीड राइटर हैं, DVD रीडर है या DVD राइटर है, DVD रोम्स हैं, उन सभी के अंदर बेटा आपका CISC का यूज होता है. ठीक है, then so this is a diagram where we have used the concept of micro program control memory, right? And we do have, so in this we have a same instruction and data path, where as in case of RISC microprocessors, RISC processors, we have a separate instruction and separate data path, right? So for this we have a single cache for instruction and data. Am I clear? So this is a difference. So on left hand side you can see RISC processors, and on right hand side you can see CISC processors, right? So this is about your RISC and CISC. So with this your chapter number 8 from Morris Menu is finished, and in next lecture we are going to start chapter number 9. ठीक है बेटा, कोई डाउट है? ठीक है, ये इनके डिफरेंसेस हैं, ये भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए. RISC versus CISC, very important topic from examination point of view. So जो RISC के केस के अंदर जो इंस्ट्रक्शन टाइप होती है वो सिंपल है, whereas in case of CISC we have a complex instructions, number of instructions, so we have 30 to 40 instructions in case of RISC, and in case of CISC we have a extended large instruction size, duration of instruction 1 cycle, more cycles. So instruction का जो format है वो RISC के केस के अंदर fixed होता है, whereas in case of CISC you may proceed with variable instruction category. So instruction execution जो है वो RISC के केस के अंदर पैरेलल होती है, पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट यूज करती है. ये आपको बताऊंगा, फुल फ्लेज चैप्टर है जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था ना, पाइपलाइनिंग, उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम. सो CISC के केस के अंदर क्या होता है, सीक्वेंशियल, पहले एक एग्जीक्यूट होगी
उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी एंड सो ऑन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इकट्ठी सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। सो addressing modes in case of RISC are simple and in case of CISC is complex. ठीक है, and so on. So after this chapter I am going to share this PPT and all lecture notes for today, right? So again, time for last poll for today. So कीजिए attempt बेटा, last for today. हरी अप, गोइंग टू एंड इन 20 सेकेंड्स। फास्ट कीजिए, बहुत आसान है बेटा।
सो थैंक यू। सो फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर क्या है? 5 स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐसे हैं जो पोल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, वो मेरे को पता चल जाएगा, उनकी अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था रिस्क स्टैंड्स फॉर इट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। सो स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तो इसका जो आंसर है बोथ ए एंड बी है। देन वी आर सर बट हमें लगा but कि नॉन कर दिया सर। नन कर दिया सर। नन क्यों कर दिया? रेस्ड्यूस सर लिखा बिकॉज था। स्पेलिंग रेस्ड्यूस था गलत ना, है ना। रेस्ड्यूस था इसीलिए। नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं बेटा। इट्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड नहीं था, स्पेलिंग मिस्टेक हाँ हुई सर, है। कंप्यूटिंग और कंप्यूटर में था। चलो कोई बात नहीं। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग भी होता है और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, दोनों ठीक है, ठीक है। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस एंड लेस एड्रेसिंग मोड्स इन रिस्क, ठीक है। अगर ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, ज्यादा एड्रेसिंग मोड्स आ जाएंगे तो वो आपका सिस्क बन जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव लिसनिंग। अगले लेक्चर में मिलते हैं, शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर। मैं थोड़ी देर में ना शाम तक आपको ग्रुप में थैंक notes यू डाल दूंगा, सर। ठीक है। आज की पीपीटी और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपकी क्लास में से सीआर कौन है बेटा? सर, हेलो बेटा, सीआर कौन है? मेरे को सर, पिंग मैं- करना। सेजल आप हो? सेजल मेरे को पिंग करना, मैं आपको नोट्स दूंगा, वो आपने ग्रुप में डालने हैं, ठीक है। हाँ ओके, पिंग करना मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मेरे। ओके सर।